Clear this concept? Now what are this quantity A naught, AN, BN? What are these quantities? What are these quantities? What are these quantities? What is this omega naught? What is this omega naught? What is this N omega naught? What are these things? Please listen to this. I'm not going to write it down. Please listen to this. N into omega naught is your harmonic frequency. Harmonic frequency, first harmonic, second harmonic, third harmonic. So this is the method. This is the method after which, after adding all of this harmonics, after adding all of this harmonic, you can able to represent that signal. I'll show you a video after this trigonometric form of representation and this exponential form of representation. After writing down these two formulas, I'm going to show you a video, a very good fundamental video from NPTEL lectures that I really loved that lectures, but उसमें ना काफ़ी सारे चीज़ हैं. So all of these things are not important. Those things are important for your like signal system subject, but those things are not important for your GATE and engineering service exams. Okay, उसके लिए प्रिपरेशन अलग होता है और उसके लिए प्रिपरेशन अलग होता है. यू अंडरस्टैंड? सो अगर आप इफ़ यू आर डूइंग PhD फॉर सिग्नल्स एंड सिस्टम, तो उसके लिए आप काफ़ी सारे NPTEL के लेक्चर्स देख सकते हो, बट उसमें कुछ चीज़ें होते हैं जो वाइटल है. सो आई गिव यू आई शो यू दैट पोर्शन एंड आई वांट यू टू प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दैट कि वहाँ से आपको फोरियर सीरीज़ का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि क्यों इसको समेशन फॉर्म में रखा जाता है और क्या है ये कॉन्सेप्ट, वहाँ से आपको आइडिया आएगा. पर उससे पहले मैं फार्मूलाज सारे लिख लेता हूँ. सो फर्स्ट देन दिस A naught will be please remember this formula. This formula is extremely important. This is your Fourier coefficient Cn, and Fourier coefficient of exponential form of Fourier series. This is your Cn. That means x of t will be given to you. X of t will be given to you. You need to find out A naught, you need to find out An, you need to find out Bn in order to represent this x naught, in order to represent this xt which is given to you in this format. If you represent this thing in this format, then that will be called as Fourier series, and this thing can only be possible if your x of t is periodic, because periodic के लिए Fourier series है. Similarly exponential form में आप आपके x of t को represent कर सकते हो. So x of t will be given to you and it will be asking कि what is the Fourier coefficient. So you need to find out Cn value from this thing, and there is so many formulas, so many beautiful note points and exam related note points is associated with this coefficient thing. I'll give you all kind of formula, all kind of concepts in this lecture. And then there is a very simple thing is there, which is saying ki the relation between this CA, this exponential form and this Fourier form, what are the relationships are? See, this is a very simple relationship. It is nothing but why I am writing it in an exponential form. It is a very simple thing. Every cos, मान लो एक cos t का एक function है, that is nothing but e to the power it plus e to the power minus it by 2. Yes or no? So एक cos के लिए यहाँ पे दो एंड में n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी है ना. सो दोनों एंड का एक कॉस के लिए इसके अंदर फंक्शन है. इस तरीके का एक फंक्शन है, इस तरीके का एक फंक्शन है, इस तरीके का एक फंक्शन है, इसके अंदर है. सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस, इसका टोटल समेशन इसके अंदर है. सिमिलरली इसका टोटल समेशन भी इसके अंदर है. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? दोनों सेम ही तरीके के रिप्रेजेंटेशन है. इट्स इन योर वे कि आप किस तरीके के रिप्रेजेंट करना चाहते हो. क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यू विल बी हैविंग क्लैरिटी
once we are done with this thing. And the relationship between these two kind of functions, the relationship is very important. So understand these four relations: C naught और A naught के बीच में relation, C naught C n and A n B n के बीच में relation, C minus n and A n B n के relation, because this is nothing but C minus n is nothing but the conjugate of C n. क्लियर? सो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स एंड बेसिक पॉइंट्स. ये सारी चीज़ आपको आई थिंक सेमिस्टर से आपका पता होगा, आपको नॉर्मल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होगा. एंड आई जस्ट बोर्ड यू बाय सेइंग दिस थिंग्स टू यू अगेन, एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस वंस एंड यू विल गेट क्लैरिटी. तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर वीडियो में? यू हैव दिस क्लैरिटी ऑन दिस थिंग ना. एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें क्या पढ़ेंगे? लिसन टू दिस केयरफुली. हाँ, one more thing, very important point. Listen to this carefully. Extremely important for GATE exam. Listen to this carefully. I have taken an example for this thing. I have taken a sawtooth wave. Listen to this carefully. I have not drawn that. I have taken a sawtooth wave. Okay, sawtooth pulses like this. Okay, so उस sawtooth pulses को if this is my x of t, in order to represent this sawtooth pulse in exponential Fourier series, that is in Cn in e to the power, वैसे वाले फॉर्मेट में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो उसका मतलब दैट मीन्स व्हाट, इसको अगर Cn के टर्म्स मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स दैट केम आउट टू बी इन like for example, let me write it down: Cn into e to the power j n omega naught t, summation n equals to minus infinity to infinity. So that sawtooth wave is represented in frequency domain. Now this frequency domain representation can be done in two ways, that is in your magnitude spectrum and in your phase spectrum. Phase spectrum. This is very important for GATE exam. Listen to this carefully. This is a representation for that sawtooth wave. Instead of solving that thing, I prefer you to give this note point to you. Very important. 2 points. 2 points are very important. Your Fourier, your frequency domain will be discrete. So what does this mean? If your x of t is in time domain, this is your time domain, na? This is your continuous time signal, then your frequency domain representation will be discrete. If you are taking Fourier series, okay, if you are taking Fourier series of a periodic x of t signal, if you are taking a Fourier series of a periodic, very important, Fourier transform में भी काम में आएगा, discrete में भी काम में आएगा, हर जगह पे काम में आएगा. Listen to this carefully. You have a periodic continuous time signal. Okay, now the Fourier series will be in frequency domain, they will be discrete. लेकिन अगर कोई नॉर्मल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट नहीं होगा, वो कुछ और होगा. दैट विल गोइंग टू लर्न इन फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रहा. फिर से बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, पीरियड, ऐसे बहुत सारे अच्छे मज़ेदार पॉइंट्स हैं ना मेरे भाई. सो मैं इसे गंदे तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, पर आपको नोट करके इसको रखना है अच्छे से. ठीक है, सुनो अच्छे से. पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इफ़ वी आर हैविंग अ पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, then
इसका ऑब्वियसली हम फोरियर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो फोरियर सीरीज ले सकते हैं. वी कैन ओनली टेक फोरियर सीरीज. वी कैन टेक फोरियर सीरीज बिकॉज फोरियर सीरीज ऑलवेज टेकन फॉर पीरियोडिक ओनली. सो पीरियोडिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन, पीरियोडिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन, पीरियोडिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन विल बी इन डिस्क्रीट टाइम, विल बी इन डिस्क्रीट टाइम फॉर्मेट, डिस्क्रीट टाइम में फॉर्मेट, डिस्क्रीट टाइम के फॉर्मेट में होगा. लेकिन नॉन पीरियोडिक सिग्नल का, नॉन पीरियोडिक सिग्नल का, फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल व्हाट, तो उसको क्या कर सकते हैं सर, नॉन पीरियोडिक का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा सर, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट नहीं होगा. अच्छा हाँ, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. मैं वहाँ पे कब बोलूँगा वो क्या होगा, पर ये आपका पहला पॉइंट है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम विल बी सिमेट्रिक. Listen to this, will be symmetric and phase spectrum will be anti-symmetric for periodic continuous time signal. For periodic signal, for periodic continuous time signal, Fourier series representation में frequency domain will be discrete, discrete time domain में होंगे, और Cn will be magnitude of Cn, that is a magnitude spectrum will be symmetric, symmetric, symmetric. You can see this is symmetric, no? And your phase spectrum will be anti-symmetric, anti-symmetric. ये magnitude spectrum, phase spectrum किसका है सर? एक सॉटूथ पल्सेस हैं, सॉटूथ पल्सेस है, पीरियोडिक सिग्नल सॉटूथ पल्सेस है, जिसका आपने ये ड्रॉ किया है, इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम. हाँ, क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? प्लीज रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ we'll end this lecture with condition for existence of Fourier series.